जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही रुक गए दास्तां कहते कहते. Hi, I am Anshul, and these couplets were used by Lal Bahadur Shastri ji on 10th January 1966, the last day when he was alive. This man has set gold standards in every field. If you see the paper 4 of ethics, every word is attached to Shastri ji, be it honesty, loyalty, integrity, probity in governance, high ideals, and whatnot. There are a lot of lessons of leaderships which, as an aspirant, you can learn. As a civil servant, anyone can learn, and as an individual, one should embrace in life. तो आइए देखते हैं शास्त्री जी के कुछ leadership lesson, and definitely in last we will see how he died. शास्त्री जी के leadership lessons को मैं 5 भागों में बांटता हूं. The first is his ethical standards. Golden ethical standard. Number 1 is like in 1956 there was a railway accident in Mehboob-Nagar. 112 people died. Shastri ji was the railway minister. He tendered his resignation to Nehru ji. Nehru ji said this is a constitutional propriety, जिसके लिए लोग बहुत उन्हें criticize किए. But he said, I am not going to accept this. And then again in November 1956, there is another accident in Ariyalur, Tamil Nadu, when 144 people died. And Shastri ji became firm और उन्होंने कहा कि ये मेरी moral responsibility है, as a railway minister, I will resign. And he resigned. So this is like golden standards, what he has set for the upcoming generation. Number 2, his austerity. उनकी सादगी, उनकी simplicity. Austerity, let me give you 2 examples. शास्त्री जी के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे सेंट कोलंबिया, उन्होंने कहा कि हमारे सब आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या दूसरे लोग हैं, उन सबके बच्चे कार से आते हैं. हम भारत के गृह मंत्री के बच्चे हैं, तब भी टांगे से जाते हैं. शास्त्री जी सेड देम, ये कार सरकार की है, मेरी नहीं है. तो जब मैं मंत्री नहीं रहूंगा, then how you will manage, you have to look into it. So he taught this lesson of austerity not only to his son but all of us. Another incident, एक भारत के प्रधानमंत्री को कार का लोन लेने के लिए 5,000 रुपए पीएनबी से मांगना पड़ा और उसमें भी उन्होंने सर्विस देखी. ही रैंग अप मैनेजर पीएनबी के कि भाई 5,000 का लोन इतनी जल्दी हो गया. उन्होंने कहा हाँ सर. तो क्या सभी के लिए आप ऐसा करते हैं? दिस स्टैंडर्ड इज सेम फॉर एवरीवन. सो दिस इज द ऑस्टियरिटी ऑफ अ पर्सन हु इज अनमैचेबल. नाउ लास्ट, देयर इज अ कार्डिलैक एंड एम्बेसडर स्टोरी. नेहरू जी के पास हिंदुस्तान 14 और एम्बेसडर कार हुआ करती थी, पर वो कभी भी किसी फॉरेन डिग्नेटरी को एयरपोर्ट लेने जाते थे तो कार्डिलैक यूज करते थे. शास्त्री जी आस्क्ड हिम, ऐसा क्यों? नेहरू जी सेड कि ये इसलिए क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि भारत भी कार्डिलैक यूज कर सकता है. बट शास्त्री जी नेवर यूज्ड कार्डिलैक. ही ओनली ड्रोव इन एम्बेसडर, आई मीन फॉर टेकिंग द foreign dignitaries, because it doesn't matter what foreign dignitaries will think. This is the simplicity of Shastri ji. Another very important personality or leadership trait is his astute leadership. Let me give you 2 examples. Vijay Lakshmi Pandit, you might be knowing about her. Vijay Lakshmi Pandit said once that Shastri ji is a prisoner of indecision. But 1965 war, भारत ने जब जीता है, उसमें शास्त्री जी's firm leadership, iron fist allowed Air Force to take over, and that's why we won. तो शास्त्री जी की leadership को जिन्होंने question किया था, she accepted that I was wrong, and she said मैं गलत थी, आपकी leadership हम सब मानते हैं. His he made a call when India was grappling with acute food shortage, and he said to everyone कि हम, उन्होंने खुद ने अपने ऊपर ही अपनाया. He left food, his family members, and then he made a call to Indians that क्या हम एक समय का खाना छोड़ सकते हैं? And nation rose to his promise and everyone left the food. This is the acceptability of the leadership, and there he gave the golden slogan, Jai Jawan, Jai Kisan.
Another important aspect, he was very loyal and honest to the country. During his reign, Central Vigilance Commission was established on the recommendations of Santhanam Committee. One more important lesson of Shastri's humility was described by Russian USSR Premier Kosygin. He said, जब शास्त्री जी ताशकंद पहुंचते हैं तब ठंड बहुत होती है, and he was wearing normal khadi coat, and Kosygin said कि सेंट्रल एशिया में ठंड के दिनों में और ज्यादा सर्दी होती, तो he gifted him an overcoat, and Shastri ji accepted it, but he did not wear. Next day he asked hesitantly कि शास्त्री जी आपको कोट पसंद नहीं आया क्या? What he said कि मेरे स्टाफ में से किसी ने उनके पास नहीं था, I gave him, definitely in my foreign trips I will use it. And this is the humility and simplicity and kindness of this person. He said that we are communists, Russians are communists, but your prime minister was super communist. Apart from this, the last thing what touched my heart is Shastri ji's one statement I want to share. CP श्रीवास्तव उनसे मिलने आते हैं, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रहे, आईएएस अफसर हैं यूपी कैडर के, एंड ही सेड टू शास्त्री जी कि प्राइम मिनिस्टर का काम मुश्किल होता है सर, हाउ विल यू डील इट? ही सेड यस, द टास्क ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज डिफिकल्ट, सो वी विल लर्न, इफ इट गोज वेल, वेल एंड गुड, इफ आई फेल आई क्विट. मतलब उनकी लीडरशिप थी कि हम सब मिलके प्रधानमंत्री के कार्यालय को अच्छा चलाएंगे, अगर कोई फेल होगा तो मैं फेल होऊंगा, राइट? वो कभी फेल नहीं हुए. आई हैव फुल फेथ इन हिम. एंड ताशकंद समझौता लास्ट में आपसे चर्चा करूंगा, 10 तारीख को जब हुआ है, उसमें शास्त्री जी ने एक पीस क्लॉज सेट किया और भारत और पाकिस्तान में जो लड़ाई थी, जंग थी, भारत जीत के और उसका अंत हुआ. और जैसे हर एक खूबसूरत कहानी का अंत होता है, ऐसे हमारे शास्त्री जी का भी अंत हुआ है, और अंत भी काइंडनेस के साथ हुआ है. लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दैट. आफ्टर साइनिंग द ताशकंद एग्रीमेंट, USSR Premier Kosygin hosted a reception for Shastri ji. शास्त्री जी, अयूब खान, पाकिस्तान डेलीगेट, USSR डेलीगेट, सबकी मुलाकात होती है और बहुत अच्छा सब रहता है. एंड देन शास्त्री जी केम बैक. 10 तारीख को लगभग वो 10:15 बजे वापस जो PM विला उनको अलॉटेड था वहां पर आ गए, और वहां CP श्रीवास्तव के साथ उनकी मीटिंग होती है, जिसमें अपनी स्टडी में बैठकर वो उनसे विवरण करते हैं, विवेचना करते हैं कि ये भाई ताशकंद एग्रीमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा, अब सब सॉल्व हो गया, भारत में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये सब मुद्दों पे वो चर्चा करते हैं. इसके बाद वो कहते हैं कि आज हम चूंकि काफी दिन से यहाँ पर ताशकंद में आए हुए थे, तो आज मैं थोड़ा जल्दी लेटना चाहता हूँ, हम रोज मिडनाइट 12:30-1 बजे सो रहे हैं. एंड देन CP श्रीवास्तव निकल जाते हैं. तब शास्त्री उन्हें कहते हैं कि आप कैसे जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे लिए USSR वालों ने एक कार अरेंज की है. देन ही सेड, नो नो, आई इंसिस्ट यू गो इन माय कार. एंड ही इंस्ट्रक्टेड द ड्राइवर दैट टेक हिम टू द डेलीगेशन जहां पे भी वो मिलना चाह रहे हैं, एंड ब्रिंग हिम बैक. और उसके बाद शास्त्री जी, क्योंकि सुबह उनको उठ के काबुल जाना था, ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. शास्त्री जी वॉज विद अ डेलीगेशन जो कि उनको पर्सनली असिस्ट कर रहे थे. उसमें जगन्नाथ सहाय थे, रामनाथ थे, एक मिस्टर कपूर सिक्योरिटी अफसर थे, और मिस्टर MMN शर्मा थे. और हमेशा प्राइम मिनिस्टर के साथ एक जो डॉक्टर रहते हैं, वो डॉक्टर चुग, RN चुग साहब भी थे. शास्त्री जी लगभग 11 तारीख, क्योंकि अब टाइम बदल गया है, तारीख बदल गई है, 1:20 पे उन्हें फील होता है कि कुछ पेन सा महसूस कर रहे हैं, एंड ही केम डाउन. मार्क माय वर्ड हियर, शास्त्री जी के विला में, उनके रूम में एक बजर टेलीफोन था, जिसे अगर वो उठाते तो वो सारा अलार्म बजता है एंड एवरीवन विल बी अलर्ट. बट लुक एट द काइंडनेस ऑफ द मैन. जाते जाते भी उन्होंने सोचा कि सबको परेशान क्यों करे, एंड ही वॉकड हिमसेल्फ एंड ही वेंट एंड आस्क्ड, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? देन रामनाथ सेड, बाबूजी आप चलें, हम डॉक्टर को बुलाते हैं. और इसके बाद शास्त्री जी को अकंपनी करते हैं कपूर और रामनाथ, एंड दे टुक. While going back to the PM's villa, his room, Shastri ji felt breathlessness. He started coughing incessantly, and within a time span of 12 minutes, 1:32 a.m.,
he left us saying, Are Baap, Are Ram. Dr. Chuk came, he put some injections, and lastly he said, Babuji, aapne mujhe mauka nahi diya. And this is how Shastri passed away. As this news reached to the Indian delegates, our Defense Minister Y.B. Chavan, External Affairs Minister Swarn Singh, then Cabinet Secretary, Home Secretary, the External Affairs Secretary, everyone came there. USSR Premier Kosygin, he also came. He was the one who signed the first condolence. And then Ayub Khan, the Pakistan's president, he also came. And then the popularity of Shastri was also in Tashkent. जब अगले दिन 11 तारीख को 9 बजे the flight was scheduled to India to take his mortal remains. The pallbearers कंधा देने में General Ayub और Kosygin दोनों रहे. The plane came to India, and then Shastriji's elder son was the one who saw him first. Indian President Sarvapalli Radhakrishnan, Vice President Zakir Hussain, and Prime Minister Gulzari Lal Nanda, everyone along with lots of governors and chief ministers came there to say the last goodbye to our beloved son, Lal Bahadur Shastri. And I want to say that there are certain controversies also attached with the death of Lal Bahadur Shastri ji. That some people said the body became blue. I want to show you the picture. This is the last image of Shastri ji, and you can see in the image the body has become blue. Now see, Shastri ji की death के लिए कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि उन्हें poison दिया गया, and some people said other thing. But let me be very specific and scientific with regard to this. There is a very famous pathologist and forensic expert, Dr. Ian West. He said that the chances of Lal Bahadur Shastri ji to be died by poisoning are very unlikely. उसका रीजन उन्होंने ये बताया कि जो बॉडी का डीकलरेशन या जो ब्लूइश हुई है उसके दो पॉसिबल रीजंस होते हैं. फर्स्ट इज साइनोसिस. साइनोसिस इज अ प्रोसेस जिसमें ब्लड से ऑक्सीजन निकल जाता है एंड बॉडी बिकम्स ब्लूइश. सेकंड इज एम्बाल्मिंग. व्हाट इज एम्बाल्मिंग? एम्बाल्मिंग इज अ प्रोसेस जहां पे कि किसी भी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए वी यूज सर्टेन केमिकल्स लाइक स्पिरिट एंड अदर केमिकल्स. So the USSR doctors put certain embalming chemicals in Shastri's femoral nerves, and that's why it is believed कि उनका जो bluish coloration था उनकी body का वो हुआ. Yes, there are also controversies कि उनका postmortem नहीं हुआ है. Yes, this is a truth. उनका postmortem नहीं हुआ है. 2-3 reasons, quick reasons I will tell you. First and the foremost is the Dr. R.N. Chugh, who was with Shastri ji. He said, and he was knowing that earlier Shastri ji had 2 heart attacks. The acute heart attack, जिसको medical भाषा में हम कहते हैं myocardial infarction, and इसी वजह से उन्होंने मना कर दिया कि ये तीसरा अटैक होगा, and that might be the reason कि उनको कोई डाउट नहीं हुआ. And when Shastri ji's body was taken back to India, Gulzari Lal Nanda, the Honorable then Prime Minister of India, was also with him. 10 जनपद में काफी देर उनके साथ रहे. He also did not say to anyone, either to Home Secretary or anyone, कि आप postmortem कराएं. And most importantly, the family member of Lal Bahadur Shastri ji also did not request to go for postmortem. तो ये थी कहानी भारत के लाल की. The one who is admirable, who is replicable, and most loved son of the soil, Lal Bahadur Shastri. Jai Lal.